Bismillah Rahman Rahim. Assalamu alaikum, dear cadets of class first year. Gentlemen, in previous lecture, I had given you a brief introduction of the play The Count's Revenge, and we had also talked about the characters in detail. The characters which are in the play, those were also discussed in the previous lecture. And in today's lecture, we'll go through scene 1, the text of the scene 1, and we'll talk about the text. Scene 1, which opens at Rue du Helder, Paris, the house of the Count of Monte Cristo. Now, the scene 1 opens from the house of Count of Monte Cristo, which is situated at Rue du Helder, Paris. Rue du Helder is the place which is situated in Paris. Now the scene 1 opens, the scene 1 starts. The Countess of Morcerf is seated and Albert is passing to and fro in extreme anger. Now, from where the scene one starts, it starts when the Countess of Morcerf is seated. Countess of Morcerf वहाँ बैठी है, and Albert, her son, is passing to and fro in extreme anger. And Albert was walking here and there in extreme anger. शदीद गुस्से में था अल्बर्ट और बिकॉज ऑफ दैट एक्सट्रीम एंगर डिस्ट्रैक्शन एंग्जाइटी he was unable to take a particular place. That is why in that state of anger and anxiety he was walking here and there. Albert tells her mother that his father is publicly disgraced in the wake of inquiry conducted by the Chamber of Deputies. The Countess of Morcerf was informed by Albert that the Albert's father, the husband of Countess of Morcerf, is publicly disgraced in the wake of inquiry conducted by the Chamber of Deputies. अल्बर्ट अभी अपनी माँ को बता रहा है कि उसके फादर की, उसके बाप की लोगों के सामने बड़ी तजलील हुई है इन द वेक ऑफ इंक्वायरी, उसके अगेंस्ट एक इंक्वायरी चली है विच इज़ कंडक्टेड बाय द चैम्बर ऑफ डिप्टीज़. वो तो चैम्बर ऑफ डिप्टीज़ है विच इज़ द लोअर हाउस ऑफ द फ्रेंच पार्लियामेंट. वहाँ इंक्वायरी चली थी अल्बर्ट के फादर के खिलाफ और जिसकी वजह से लोगों के सामने बड़ी उसकी तजलील हुई है. On the charge that his father surrendered the fortress of Yanina to the Turks in 1823 after taking bribes. And what was the blame on Albert's father? That his father had surrendered the fortress of Yanina to the Turks in 1823 after taking bribes. और अल्बर्ट के फादर पर इल्ज़ाम ये था, जिस इल्ज़ाम की वजह से उसके अगेंस्ट वो इंक्वायरी चली, वो इल्ज़ाम ये था कि उसने यनीना का जो फोर्ट्रेस है, किला है, वो उसने तुर्कों के हवाले कर दिया था 1823 में, उनसे रिश्वत लेकर, उनसे पैसे वगैरह लेकर उसने अपने वतन के साथ गद्दारी की थी, अपने कंट्री फ्रेंच के साथ. ही वॉज अ ट्रेटर एंड ही डिसीव्ड हिज कंट्री. उसने गद्दारी की और जिस गद्दारी की वजह से उसको सज़ा मिली और लोगों के सामने उसकी बड़ी तजलील हुई. Then the Chamber of Deputies declares the Count of Morcerf as traitor because he is charged of the act of treason what he committed while serving in the French army as a captain.
When Albert's father, Countess of Morcerf, was rendering his services as a captain in French army, he had deceived his country. उसने अपने वतन के साथ गद्दारी की थी, धोखा दिया था अपने मुल्क को, गद्दारी की थी अपने मुल्क के साथ, जिसकी वजह से वो जो चैम्बर ऑफ डिप्टीज हैं वो ये ऐलान करते हैं कि ये गद्दार है। द काउंट ऑफ मोरसेफ, उसके लिए वो कह रहे हैं कि ये गद्दार है बिकॉज उसने अपने वतन के साथ धोखेबाजी की है, दगाबाजी की है, गद्दारी की है। और उस वक्त उसने ये सारा कुछ किया, उस वक्त उसने गद्दारी की थी अपने वतन के साथ जब वो फ्रेंच की आर्मी में कैप्टन के तौर पर काम कर रहा था। Due to these charges, they are ruined. Now, Albert says कि because of these charges we are ruined. अल्बर्ट अपनी माँ को बता रहा है कि इस सारे मामले की वजह से, ये जो इल्ज़ामात हैं मेरे वालिद के खिलाफ, इसकी वजह से हम जो है वो तबाह व बर्बाद हो चुके हैं। They feel insult for being declared the family members of a traitor. Now, Albert was uh, feeling ashamed of himself that he is the part of the family which is publicly disgraced. मतलब अल्बर्ट ये अपनी तौहीन और तजलील महसूस कर रहा था कि उनकी जो फैमिली है, जो मोरसेफ फैमिली है, उसको गद्दार करार दिया गया है, जिसकी वजह से अल्बर्ट बड़ी तजलील और तौहीन अपनी समझ रहा था। Albert considers his father's disgrace as his own and decides to leave Paris. Now, what were the opinions of the Albert? He considers his father's disgrace as his own. अल्बर्ट ये समझ रहा था कि उसके वालिद की जो तजलील हुई है, जो उसकी बेइज्जती हुई है, वो सिर्फ उसकी इंसल्ट नहीं है। अल्बर्ट समझ रहा है कि उसकी तजलील मेरे बाप की तजलील मेरी तजलील है। दैट्स वाई ही हैड डिसाइडेड टू लीव पेरिस। जिसकी वजह से उसने ये फैसला किया था कि आई कैन नॉट बियर द नेम ऑफ मोरसिफ एनी मोर। दैट्स वाई ही हैड डिसाइडेड टू लीव पेरिस। वो इस सिचुएशन में नहीं था कि लोगों के सामने घूम सके और अपने आप को मोरसिफ कहलवा सके, जिसकी वजह से इट वॉज डिसाइडेड बाय हिम टू लीव पेरिस। But before leaving Paris, he wants to take revenge on the person who has exposed his father. He was also saying, I will leave Paris, but before going from Paris, I will take revenge from that person who has exposed, who has revealed the reality of my father. मतलब वो उसको कह रहा है अपनी माँ को कि वो पेरिस तो छोड़ देगा, लेकिन पेरिस छोड़ने से पहले वो उस बंदे से ज़रूर इंतकाम लेगा और उसको जाहिर करेगा, उस बंदे को ढूंढेगा, उसको ढूंढ कर, जिसने ये सारा कुछ उसके वालिद के खिलाफ किया है, उसको ढूंढ कर फिर उसको ज़रूर भी वो सज़ा देगा। He asked his friend Bechamp to find out the name of the hidden enemy. Now, the Bechamp, who was the editor in Paris newspaper, he was asked by Albert to find the name of that person. और बेचैम को उसने ये दिया था टास्क कि वो उस बंदे का नाम ढूंढे। The Count of Monte Cristo visits the house of Morcerf. Now, at that time, the Count of Monte Cristo visits the house of Morcerf. वो जो काउंट ऑफ मोरसेफ का घर है, जहाँ काउंटेस ऑफ मोरसेफ बैठी है और अल्बर्ट बैठा है, वहाँ काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो, who is the friend of Albert, visits their home. Albert asks Monte Cristo to help him for finding the man behind this situation. Now, not only Albert asked Becham to help him in finding that person, but he also asked his very close friend Monte Cristo to help him for finding the man behind this situation. Albert अपने दोस्त मोंटी क्रिस्टो से भी मदद तलब कर रहा है कि आप मेरी मदद करें उस बंदे को ढूंढने में जिसने ये सारा कुछ मेरे वालिद के साथ किया है। Monte Cristo refuses and suggests him for a planned revenge instead of duel. अभी मोंटी क्रिस्टो इनकार कर रहा है अल्बर्ट के साथ कि he will not find that person,
क्योंकि वो उसको ये कह रहा है कि यू हैव ऑलरेडी आस्क्ड बिचम टू फाइंड दैट पर्सन एंड आई एम सर्टेन दैट बिचम विल फाइंड दैट पर्सन, और मुझे यकीन है कि बिचम उसको ढूंढ लेगा। और मोंटी क्रिस्टो जिसकी वजह से इनकार कर रहा है, और ड्यूअल के हवाले से भी वो अल्बर्ट उसको कह रहा है कि you should be my second, but he also refuses to be second of Albert, और अल्बर्ट का सेकंड होने से भी वो इनकार कर रहा है, और उसको ये कह रहा है कि इंतकाम अगर तुम लेना चाहते हो तो उसे कोई बड़ा प्लान बना के, अच्छी तरह से मंसूबा बंदी बना के, एक हिकमत अमली बना के फिर उससे इंतकाम लो, ये ड्यूएल वगैरह की बात तुम नहीं करो। जिस बंदे ने इतनी ज़्यादा तुम्हारी फैमिली को तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है, so you must punish him severely, बहुत ही शदीद कोई सज़ा उसको दो, बड़ा एक प्लान करके, ये ड्यूएल वगैरह की बात तुम छोड़ो। Then Bisham succeeds and finds out the name of the person involved in making the charge public in secret manner. फिर क्या होता है कि बिचैम कामयाब हो जाता है उस बंदे का नाम ढूंढने में, जो इस सारे मामले में जिसका हाथ था, जिसने बहुत ही पुरस्कार तरीके के साथ ये सारा काम किया था और अल्बर्ट के फादर को पब्लिकली डिस्करेज किया था। बिचैम succeeded to find that person, the name of that person. Becham reveals unto Albert that the person involved is none but his good friend Monte Cristo. अभी बेचैम जो है वो उस बंदे का जब नाम जाहिर करता है अल्बर्ट के सामने, तो अल्बर्ट and Countess of Morcerf, they both got shocked after knowing the name of the person who is their close friend. मतलब जो बंदा उनका साथी है, दोस्त है, उनका वेल विशर है, जब उनको ये पता चलता है कि मोंटी क्रिस्टो इज द पर्सन हु हैज डन ऑल दिस अगेंस्ट द फादर ऑफ अल्बर्ट, तो वो बिल्कुल हैरान रह जाते हैं कि वो कोई और बंदा नहीं, लेकिन वो बंदा कौन है, मोंटी क्रिस्टो है। आफ्टर नोइंग द फैक्ट अल्बर्ट गेट्स एंग्री, अल्बर्ट बहुत ही गुस्से में आ जाता है जब उसको ये पता चलता है कि ये सारा कुछ उसके बहुत ही नज़दीकी और करीबी दोस्त अल्बर्ट ने किया है, सॉरी काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो ने किया है। Consequently, as a result, Albert approaches Monte Cristo and challenges him for fighting a duel. फिर क्या होता है कि अल्बर्ट गुस्से में आकर काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो के पास जाता है और उसको आगे जाके चैलेंज करता है कि आप मेरे साथ ड्यूल लड़ें, आप मेरे साथ लड़ें, और जैसे एज आई कैन टेक रिवेंज फ्रॉम यू। सो जेंटलमैन, that was all about the scene 1. In our next lecture we'll read the textual lines of the scene 2 of the play, The Counts of Monte Cristo, The Count's Revenge. So I hope you will properly understand the text of the play, The Count's Revenge. Thank you so much, gentlemen.